Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Murtaza Beg, first year MBBS student from Government Medical College श्रीनगर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट के आंसर की के रिलेटेड। हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है वो P1 सीरीज़ है। सो स्टार्टिंग विद द फिज़िक्स पोर्शन हमने सॉल्व किया है और मोस्ट प्रोबेबल आंसर निकाला है। आपको हम डायरेक्टली आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। तो स्टार्टिंग विथ फिज़िक्स सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन जो है दैट्स इन ए पोटेंशियोमीटर सर्किट a cell of EMF 1.5 volt gives a balance point at 36 centimeter length of wire. If another cell of EMF 2.5 volt replaces the first cell, then at what length of wire the balance point occurs? इस क्वेश्चन का जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड 60 सेंटीमीटर्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 2, सेकंड वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 3, एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 1, 8 × 10⁻20 न्यूटन्स। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 1, हैविंग ए परमानेंट डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, ए कप ऑफ कॉफ़ी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री टू 80 डिग्री, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमें मिला है दैट इज़ ऑप्शन सेकंड, सॉरी ऑप्शन थर्ड, 13T/5। और क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो ये दो स्टेटमेंट्स दिए हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन 4, फोर्थ ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन। Question number 7, nucleus with mass number 240 breaks into two fragments each of mass 120, the binding energy भी दी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन फर्स्ट 216। और क्वेश्चन नंबर 8, टू चार्जड spherical conductors of radius r1 and r2, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 3, r2/r1। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 3, 2n। और द क्वेश्चन नंबर 10, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इज 100 आवर्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 3, 1/2/2। क्वेश्चन नंबर 11, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 3, -j + k एंड -j - k। और क्वेश्चन नंबर 12, parallel plate capacitor has a uniform electric field E in a space between the plates, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 1/2 epsilon naught E square A into D। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन थर्ड, FAT/2। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, question number 14, a particle is released from height s from the surface of earth. At a certain height its kinetic energy is 3 times its potential energy, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 1, s/4 एंड √3gs/2। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज ऑप्शन थर्ड, 2c। क्वेश्चन नंबर 16, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 2, m/2 l⁻⁻1 एंड t/0। And question number 17, a lens of large focal length and large aperture is best suited as an object of an instrumental telescope since, इसका जो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्ट इंडेक्स दिया है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 2, 60 डिग्रीज। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 3, टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, a screw gauge gives the following readings when used to measure the diameter of a wire. Main scale reading is 0 mm, circular scale reading is 52 degrees। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, 0.052 सेंटीमीटर्स। Now coming to question number 21, a small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest at a time 0. Let Sn be the distance traveled, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है that is option 3, 2n - 1/2n + 1।
Coming to question number 22, a convex lens A of focal length 20 cm and concave B of focal length 5 cm are kept along the same axis with a distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam, then the distance d in centimeters will be. इसका जो correct option है that is option 3, 15 centimeters. Now coming to question number 23. The escape velocity from the Earth's surface is v. The escape velocity from the surface of another planet having the radius 4 times that of Earth and same mass density is. इसका जो correct option है that is option 1, 4 times escape velocity of Earth. Coming to question number 24. इसका जो correct option है that is option 1, 5 ohms. Now coming to question number 25, a spring is stretched by 5 centimeters by a force 10 Newton. The time period of the oscillators when a mass of 2 kg is suspended by it is. इसका जो correct option है that is option 1, 0.628 seconds. Coming to question number 26, a thick current carrying capable of radius r carries current I uniformly distributed across its cross section. इसका जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा उसका करेक्ट ग्राफ जो है दैट इज ग्राफ नंबर 4. यहाँ पे जो ये ग्राफ 4th वाला है यही इसका करेक्ट ऑप्शन है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ए undergoes spontaneous decay in the sequence. The possible decay particles in the sequence are, हमें इनका नाम बताना है possible sequence of dissociation का. इसका जो correct option है that is option 4, beta positive, alpha and beta negative. Coming to question number 28. The velocity of a small ball of mass m and density d when dropped in a container filled with glycerine becomes constant after some time. If the density of glycerine is d by 2, then the viscous force acting on the ball will be. इसका जो correct option है that is option 2, option 2, mg upon 2. Coming to question number 29. Water falls from a height of 60 meters at a rate of 15 kilograms per second. इसका जो how much power is generated by the turbine, इसका जो correct option है that is option 3, 8.1 kilowatt. Coming to question number 30. A capacitor of capacitance C is connected across a source AC source of voltage V. इसका जो correct option है that is option 1. Displacement current is equivalent to V naught omega C sin omega t. Coming to question number 31. इसका जो correct option है that is option 1, 10 to the power 15. Now coming to question number 32. The electron concentration in an n-type semiconductor is the same as hole concentration in a p-type conductor. इसका जो correct option है that is option 4. Current in n-type is greater than current in p-type. इसमें थोड़ा सा confusion हमें हुआ है, तो आप इसमें थोड़ा मार्क रख लीजिएगा, फिर ऑफिशियल की पे आप कंफर्म करेंगे. Now coming to question number 33. The effective resistance of a parallel connection that consists of 4 wires of equal length, equal area of cross section and same material is 0.25 ohm. What will be the effective resistance हमें निकालनी है अब if they are connected in series. इसका जो correct option है that is option 1. फिर यहाँ पे effective resistance आती है 4 ohms. Now coming to question number 34. इसका जो correct option है that is option number 4. Now question number 35. An electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface of negligible work function. इसका जो correct option है that is option 4. Lambda is equivalent to 2 mc upon h lambda d raised power 2. Now coming to question number 36 of section B physics. From a circular ring of mass m and radius r, an arc corresponding to a 90-degree sector is removed. 90-degree sector इसमें remove किया गया है. The moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring is k times mr square. Then the value of k is. इसका जो correct option है that is option 2, 3/4. k का जो value आएगा वहाँ पे 3/4. Now coming to question number 37. A point object is placed at a distance of 60 cm from a convex lens of focal length 30 cm. इसका जो correct option है that is option 1, 20 cm from the plane mirror. It would be a virtual image. Now coming to question number 38. For a given circuit, the input digital signals are applied at a terminals ABC. What would be the output हमें बताना है at the Y.
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन थर्ड. Now coming to question number 39. A car starts from rest and accelerates at 5 meters per second square. At t is equal to 4 seconds, a ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t is equal to 6 seconds? G हमें लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 1, 20 √2 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Now coming to question number 40. Uniform rod of length 200 cm and mass 500 gram is balanced on a wedge placed at 40 cm mark. इसका जो find the value of m such that the rod is in equilibrium. इसका जो correct option है that is option 1, 1/12 kgs. Now coming to question number 41. Two conducting circular loops of radius r1 and r2 are placed in the same plane with their centers coinciding. If r1 is much greater than r2, the mutual inductance m between them will be directly proportional to. इसका जो correct option है that is option 1, r2 square upon r1. Now coming to question number 42. Three resistors having a resistance r1, r2 and r3. हमें इसमें रेशियो बताना है i3 upon i1 का. इसका जो correct option है that is option 3, r2 upon r2 plus r3. Now coming to question number 43. A particle of mass m is projected with a velocity v is equivalent to k times ve, where k is less than 1 from the surface of earth. V is escape velocity. इसका जो correct option है that is option 1, r k square upon 1 minus k square. Now question number 44. A uniform conducting wire of length 12A and resistance R is wound up as a current carrying coil in the shape of. इसका जो correct option है that is option 2, under root 3ia square and 3ia square. Coming to question number 45. A step down transformer connected to an AC main supply of 220 volt is made to operate at 11 volt to 44 watt lamp. Ignoring power losses in the transformer, what is the current in the primary circuit? इसका जो correct option है that is option 2, 0.2 amperes. Coming to question number 46. LCR circuit, series LCR circuit containing 5H inductor, 80 microfarad capacitor and 4 ohm resistor is connected to 230 variable frequency AC source. इसका जो correct option है that is option number 4, 46. Now coming to question number 47. 27 drops of same size are charged at 220 volt each. They combine to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. इसका जो correct option है that is option 1. Now coming to question number 48. A ball of mass 0.15 kg is dropped from a height 10 meters, strikes the ground and rebounds the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball is nearly. इसका जो correct option है that is option 3, 4.2 kg meter per second. In the product, इसका ये question number 49. In the product, force is equivalent to Q into V cross B. इसका जो what will be the complete expression for B? इसका जो correct option है that is option 3, minus 6i minus 6j minus 8k. Now coming to question number 50. A particle moving in a circle of radius r with a uniform speed takes a time t to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle of theta to the horizontal, the maximum height attained by it equals 4r. The angle of projection theta is then given by. इसका जो correct option है that is option 1. Theta is equivalent to sine inverse of 2gt square upon pi square r का whole raised power 1/2.